गणेश के बिना हमारा सनातन धर्म कैसे हो सकता है? विनायक के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। विनय के बिना क्या हो सकता है? विद्या का शृंगार विनय है। घर में गणेश जी होना चाहिए। हमारा कोई भी कार्य प्रारंभ हो उसमें गणेश जी को रहते हैं। या भगवान व्यास जी ने शिव कथा कहनी है, लेकिन गणेश जी को नहीं भूले। आपके घर में गणेश भगवान होना चाहिए। अरे सुबह में आंख खोले, भगवान गणेश को याद करे। विघ्न हरता है पर मंगल करता भी है। विघ्नेश्वरा वरदा सुरप्रिया लंबोदरा। देवताओं को अति प्रिय गणेश है। गणेश की पूजा करने से माता उमिया भी प्रसन्न रहती है। गणेश की पूजा करने से शिव भी प्रसन्न रहता है। आप कभी अवसर मिले किसी के घर जाओ ने, तो उसके बच्चे का आदर करो तो माता पिता प्रसन्न रहते हैं। व्यवहार कुशलता है। भले तेना घરના બાળકો શેડાવાળા હોય, ભલે ગંગા યમુના બંને વહેતા, પણ એ બાળકોને વહાલ કરો. બાળકોને વહાલ કરો એટલે એના માતા પિતા ખૂબ રાજી થાય. ગણેશજીની આરાધના કરો એટલે શિવ અને પાર્વતીની કૃપા વરસવા લાગે છે. વિઘ્નહર્તા દેવ, મંગલ કરતા દેવ. विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय देवताओं को प्रिय गणेश जी है. लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय जगत को प्रकाशित करने वाला गणेश है. नागाननाय हाथी का मस्तक धारण करने वाला. नाग का अर्थ होता है हाथी. ये गणेश जी, ये गणेश भगवान. नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. पुष्पदंत महाराज ने स्तोत्र की रचना करी, लेकिन पहले ओम गजाननम गणेश जी से प्रारंभ किया. ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासूतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्. नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्. पाद का अर्थ होता है चरण, पंकज का अर्थ होता है कमल. आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ गणेश भगवान. अरे हमारे आचार्य जी भगवान की पूजा कराते हैं. पूजा करनी है माता जी की, पूजा करनी है विष्णु जी की, पूजा करने को अन्य देवताओं की, पूजा करनी है शिव की. तो शिव की पूजा पहले नहीं होती, पहले ओम गणानंद गणेश. ओम हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जामि गर्भधमा मम जासि गर्भदम्. ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. हे भगवान गणेश की महिमा है. वक्रतुंडा विद्महे दंताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्. जो सुमिरत सिद्धि हो. गणनायक कभी बार गणों के अध्यक्ष है भगवान गणेश जी. ये गणेश जी की महिमा है. मुकुम करोति वांछालम पंगुलम धीरे. जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बरि बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण से. गणेश की महिमा. गणेश का सामर्थ्य क्या है? तो गणेश जी की जो उपासना करते मुकुम होई वांचालम. मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरी बल गहन. हे गणेश जी की महिमा.
जासु कृपा सो दयाल श्री गणेशाय नमः। द्रवमु सकल कलिमल दहन जासु कृपा सो दयाल द्रवमु सकल कलिमल दहन वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानाम् मानस तुलसी का प्रसाद छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको एकदन्ताय शुद्धाय शाबाश। सुमुखाय प्रणम्यं शेषादेव गौरी पुत्र विनायक भक्तवाद नित्य कामायु सिद्धि प्रथम वक्रतुंड एकदंतम तृतीयकम तृतीयकम द्वादश गणेश द्वादश गणेश। मेरे युवान भाइयों बहनों को प्रार्थना है, गणेश जी को साथ में रखो ने तो दुनिया के शिखर सर कर सकोगे। कुछ भी न हो सके लेकिन स्तोत्र रोज बोले प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गलाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूमवर्णं तथास्तम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य इति श्री प्रसादतः नारद पुराणे इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन नाम गणेश द्वादश नाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक ताली लगाए, ताली महादेव को वाले अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया गणपति बाबा मोरया। बोलिए गणेश गजानन भगवान की। घर में गणेश जी होना चाहिए। कितना दुर्भाग्य लोग हैं घर में गणेश जी की पूजा नहीं है और रिद्धि सिद्धि की अपेक्षा रखते हैं, सिद्धि बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं, घर में गणेश जी नहीं है। ये कथा तो महादेव की कह दी है। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी को नहीं छोड़ा। अब शिव महापुर कथा प्रारंभ हो रही है।
अब धीरे धीरे कथा में प्रवेश कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराणे जी भगवान की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, सभी तीर्थों में राजा है, जिनको प्रयागराज कहते हैं। सभी लिंगों का राजा महाबलेश्वर है, महाबल कहते हैं, चक्रवर्ती लिंग कहा जाता है। सभी तीर्थों में प्रयाग तीर्थ है, श्रेष्ठ तीर्थ है। इस साल हम गए थे प्रयाग तीर्थ में कथा गाने के लिए, गए साल दीपावली से पहले गए थे। वहां हमने प्रयाग तीर्थ के लिए एक सुंदर हमने एक कीर्तन तैयार किया था, जो प्रयाग तीर्थ को ध्यान में रखकर। इसमें आप भी गए होगे कभी प्रयाग, कभी अवसर मिले तो प्रयाग जाना भी चाहिए। सुंदर तीर्थ है प्रयागराज। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, हमारे सबकी रचना है, सुंदर है। जहाँ वेणी माधव है, जहाँ सोए हुए लेटे हुए हनुमान है, जहाँ भारद्वाज मुनि का सुंदर आश्रम है, जहाँ रामचरित मानस का गान हुआ है, ये सुंदर है पवित्र धरा, ये प्रयागराज है। इस साल हम जितेंद्र गिरी माता जी के माध्यम से एक सन्यासिनी माता जी ने शिव कथा का आयोजन किया था। हम गए थे प्रयाग, वहां हमने प्रयाग तीर्थ की याद स्वरूप ये सुंदर एक कीर्तन तैयार किया था। आइए साथ में गाएंगे, नहीं गाएंगे तो श्रवण करेंगे भाव से। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। गंगा यमुना सरस्वती संगम, गंगा यमुना सरस्वती संगम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। कथा क्या? कथा मन की यात्रा है। यहाँ से प्रयाग तीर्थ को याद करूं तो आपका मन प्रयाग तीर्थ पहुंच गया। मन की यात्रा करा रहा हूं, छह शब्दों की यात्रा है। मैं यहाँ से सोमनाथ को याद करूं, आपको सोमनाथ में मन पहुंच गया। मैं काशी को याद करूं, आपका मन काशी में पहुंच गया। मैं रामेश्वर को याद करूं, आपका मन रामेश्वर पहुंच गया। और मैं कैलाश शिखर को याद करूं, आपका मन कैलाश पहुंच गया। क्यों? ये शब्दों की यात्रा है, ये मन की पावन यात्रा है, ये कथा है। वेणी माधव सखा तुम्हारे, बेटे हैं हनुमान। प्रयाग तीर्थ के सखा वेणी माधव, वेणी माधव सखा तुम्हारे, बेटे हैं हनुमान। त्रिवेणी संगम साधु संत जन, त्रिवेणी संगम साधु संत जन, करे कुंभ का स्नान, करे कुंभ का स्नान,
रहता है, अव्यवस्था, असुविधा रहती है। लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुविधा ये तीर्थ यात्रा है। सुत सनकादि ऋषि मुनियों की कथा भूमि को प्रणाम, कथा भूमि को प्रणाम। पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा जारी, तीर्थराज की महिमा जारी। ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार। पावन तीर्थ प्रयाग, अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। आपके मन में ये लग रहा होगा कि अब कल से तो कथा शुरू होगी, अब प्रारंभ कर रहे, अभी प्रारंभ, कब प्रारंभ करेंगे? अब प्रयाग तीर्थ में शौनकादि महात्मा सूत जी का सुंदर संबोधन करते हैं। कथा कहने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। कथा वक्ता पर आधारित नहीं, कथा श्रोता पर आधारित है। श्रोता कितना भाव से कथा सुन रहा है और कैसे सुन रहा है। कई कई स्थानों पर हम जाते हैं तो कथा नहीं कहनी तो भी कथा निकलने लगती है। ऐसे ऐसे परिपक्व श्रोता रहते सामने, ऐसा भाव से भरा हुआ श्रोता, क्योंकि कथा वक्ता नहीं कहता, कथा श्रोता बोलता है। कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए, इन पर कथा का आकार बनता है। लेकिन यहां बहुत मुझे अच्छा लगता है, किसी का चेहरा नहीं दिखाई देता मुझे, जो कि इतनी बड़ी लाइट सामने है। आकाश में शब्द प्रहार हो रहा है, इसलिए सूत का संबोधन हुआ, महाभाग्य का है। हे महाभाग्यवान, हे सूत पुराणे जी, हम सबको धन्य करें। हम सभी आपको आशीर्वाद देते हैं। कौन आशीर्वाद देता है? वक्ता नहीं, श्रोता। कथा सुनने वाले सभी वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। क्यों? उनके मुख से कथा सुन रहे हैं, क्योंकि वहां से कुछ मिल रहा है। कथा सबसे बड़ा दान है। कथा का दान कौन करता है? वक्ता करता है। इसलिए कोई हमारे पास क्या क्यों आते हैं? कथा लेने के लिए आते हैं, और हम उसको कथा देते हैं। इसलिए वक्ता दाता है। इसलिए सभी कथा सुनने वाले श्रोताओं ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि आप दाता आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीव भव। ये भगवान व्यास जी की सुंदर रचना है। और कल भी कहा था, आज फिर से कहता हूं, एक एक श्लोक महादेव की वंदना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हम सभी बहुत कम लोग संस्कृत जानते हैं। जानते, थोड़ा सा जानते, पूर्ण तो नहीं जानते। और सभी कथा में बात मैं कहता हूं, देश जब आजाद हुआ था तब दक्षिण भारत में से गूंज उठी थी तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत रहनी चाहिए। और पूरी पृथ्वी पर बड़े लिखे भाई बहनों को मेरी विनती, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पूरे भारत में, पूरे पृथ्वी पर जितने देश हैं
इस देश की परंपरा रही, इस देश की धर्म ग्रंथों की जो भाषा होगी वही उन लोगों की राष्ट्रभाषा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। पूरी पृथ्वी पर जितने देश हैं, जिन देश का धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ की जो लिपि है, इनकी जो भाषा है वही उनकी राष्ट्रभाषा है। हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा क्या है भाई? संस्कृत। तो हमारा भारत देश एक ऐसा है कि हमारे धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वही हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये देश पूरे वर्ल्ड में एक है। हमारा दुर्भाग्य है ना, हमारा भाग्य नहीं हुआ। और जब देश आजाद हुआ तब से जो हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत रही होगी, तो जैसे हिंदी आप बोलते, हिंदी समझते हैं, वैसे संस्कृत भाषा आप कड़कड़ाहट बोलते होगे और संस्कृत भाषा समझते होगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए सभी श्लोक तो हम नहीं गा रहे हैं, लेकिन कोई कोई श्लोक भगवान के वंदना स्वरूप हम गा रहे हैं। सभी शौनक आदि महात्माओं ने गाए। हे सूत पुराणे जी। सूत सूत महाभाग। कोई भी महादेव का भक्त है वो महाभाग्यवान है। और शंकर जी देव नहीं, शंकर जी महादेव है, महाभाग्यवान। क्या कहा? चिरंजीव सुखी भव यश्रावयसि नस्तात् शंकरो परमां कथा। शंकरो परमां कथा। आपको कोई पूछे कल कि रात को 3 घंटे कथा सुन रहे हैं आप, कथा सुनने से क्या मिलेगा? आप क्यों कहा? आप क्या कहेंगे? यहां जवाब दिया, शंकर और परमाम कथा। शंकर जी की कथा क्या देती है? शांति का दान करती है। અને ભગવાન શંકરજીએ કાલીને ક્રોધ ઉપર પ્રવચન આપ્યું। ચૂંકि કાલી દેવતાઓની રક્ષા માટે મહાકાલી બની હતી, માતા ઉમિયા સ્વયં ભવાની। ત્યારે ભગવાન શંકરે કાલીને શાંત કરવા માટે કહ્યું, કાલી, ક્રોધ તો ચાંડાલ છે। કોઈને ક્રોધ આવ્યો ને તેના સ્પર્શ કરીએ તો નાવવું પડે। ક્રોધી માણસને ચાંડાલ સમજવું અને નાની નાની વાતોમાં મોટા મોટા ક્રોધ કરે એ બુદ્ધિહીન મનુષ્ય સમજવો। એટલે જીવનમાં સુખી થવું હોય તો શાંત રહેવું। ક્રોધ કરવાથી આપણું અહિત થાય છે। હમણાં વિજ્ઞાને પણ સંશોધન કર્યું કે જે માણસ એક ક્ષણ માટે ક્રોધ કરે છે 72 કલાક સુધી તેને કરોડરજ્જુમાં કંપન રહે। 72 કલાક। આપણે કરોડરજ્જુ હોય ને જે આપણા શરીરના સંદેશા દિમાગને પહોંચાડે, 1 કરોડરજ્જુ ઝીણી 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 આંખ દ્વારા જોઈ ન શકાય, એમાં કંપન રહે। એટલે કથા સાંભળ્યા પછી આજ બીજા દિવસે આપણે સૌ સંકલ્પ કરવાનો કે ભલે માળા ન થાય, સેવા ન થાય, દાન ન થાય, પુણ્ય ન થાય, તપ ન થાય, જપ ન થાય, સ્મરણ ન થાય, આથી દ્રઢ સંકલ્પ કરવાનો કે ભલે જે થવું એ થઈ જાય, ક્રોધ નહીં કરવો, શાંત રહેવો। ક્રોધ કરનારો માણસ જલ્દી ગરડો બની જાય। ક્રોધ એ મૃત્યુનું દ્વાર છે। ક્રોધ એ અજ્ઞાનતાનું પ્રતીક છે। અજ્ઞાનતાથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, અહંકારથી ક્રોધ વધે છે અને ક્રોધને કટુ વાક્યો સાથે ઘનિષ્ઠ સંબંધ હોય છે। ક્રોધી માણસ કદી મીઠું ન બોલી શકે અને જ્યારે ક્રોધ આવે ત્યારે કાન બંધ થઈ જાય, નહીં, ક્રોધ આવે ત્યારે આંખ બંધ થઈ જાય છે અને કાન પણ બંધ થઈ જાય અને મુખ ખુલી જાય। આ ક્રોધની ઓળખાણ છે। જળમૂળમાંથી વિવેકનો નાશ કરે તે ક્રોધ છે। અત્યંત ક્રોધી વ્યક્તિ આંખ હોય તો પણ તેને આંધળો સમજવો। ક્રોધનું તોફાન વિવેકનો જળમૂળમાંથી નાશ કરે। તો તે ક્રોધને જીતવા માટે એક જ આપણી પાસે ઉપાય છે, ક્રોધ આવે ત્યારે મૌન રહેવું, ક્રોધ આવે ત્યારે શાંત રહેવું। અને ક્રોધને કોઈની ઓળખાણ નથી રહેતી, એટલું યાદ રાખવું। પછી બાપ છે કે દીકરો છે કે પત્ની છે કે પતિ છે, આ ક્રોધ એટલો ભયંકર છે। તેથી આજે આપણે ગાંઠ બાંધીને નીકળવાનું છે, શાંત રહેવાનું છે। ઘણા લોકો તો કારણ વગરના કેટલા માથા પછાડતા હોય છે। હવારમાં બા ક્રોધ કરતા હોય, મોઢું ચડાવીને બેઠા હોય, આ કે જીવન છે ભલામણા યાર?
જીવન કેટલું મૂલ્યવાન છે. આ દુનિયામાં બધું તમને મળે, જીવનનો સમય થોડો પાછો મળવાનો છે. આજે મને અમારે એક પરમ ભક્તે પૂછ્યું કે આખા અંગમાંથી તમને વાલામાં વાલું અંગ કયું? મેં તો એક એક અંગનું મૂલ્ય છે. નાક ન હોય તો ભૂંડા લાગીએ, કાન ન હોય તો સારા ન લાગીએ, આંખ ન હોય તો કેવા લાગીએ, વાળ ન હોય તો ટાલિયા કેવા ખરાબ લાગે. હવે તો જો કે પ્લાન્ટ બેસાડવા લાગે, લોકો ઉગાડે છે, વાળ ઉગાડે છે ઉરિયા ખાતર નાખીને. એમ જ નામ ને ખાતર નાખે, વાળ ઉગાડે. બોલો કેવા માણસો, 5-5, 10-10 લાખનો ખર્ચ કરે વાળ ઉગાડવા માટે. હતા ત્યારે હાંચવા નહીં, અને હવે વાળ વહી ગયા તો વાળ ઉગાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. શરીરના એક એક રૂવાડાનું મૂલ્ય છે. શરીર ઉપર જો રૂવાટી ન હોય ને તો જીવન જીવવાનો આનંદ જતો રહે. એક એક અંગનું મૂલ્ય છે. ક્યારેક છે ને, ક્યારેક મૂલ્ય સમજવા માટે કરવું, એક હાથ બાંધી દેવો અને એક હાથથી આખો દી કામ ચલાવવું, કેટલી તકલીફ પડે. એટલે ભગવાનને રોજ આભાર વ્યક્ત કરો. ભગવાન તે મને 2 હાથ આપ્યા છે, આભાર વ્યક્ત કરું છું. તે મને 2 આંખો આપી, આભાર વ્યક્ત કરું છું. તે મને 2 કાન આપ્યા, આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભગવાન તે મને કેટલું સુંદર શરીર આપ્યું છે. સવારમાં ઉઠીએ એટલે ભગવાનના લાંબા હાથ કરીને, ભગવાન તે મને કેટલું ઉદાર બનીને આપ્યું છે. તો ભગવાન કેટલો રાજી. આ તો ભગવાન એક જ, આમ તે મને કાંઈ ના આપ્યું, કાંઈ ના આપ્યું, કાંઈ ના આપ્યું. અરે એટલું બધું તને આપ્યું છે. તેથી આજથી નક્કી કરવાનું છે, આપણે ક્રોધ નહીં કરવાનો, શાંત રહેવાનું. એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત આપી દઉં. એક મધ્યમ વર્ગીય પિતા છે, જીવનની મૂડી ભેગી કરીને પહેલી વાર 4-wheel ગાડી લે છે. એકનો એક દીકરો છે, પણ એટલો તોફાની, એટલો કજાડો છે. અને ઘણા છોકરા એવા હોય, કોઈને ઘરે મહેમાન થાય તો સોફાની આગળથી ન બોલે, સોફાના પાછળથી બે. આપણા ઘરે મહેમાન થઈને આપણને એમ થાય કે ભગવાન 200 કિલોમીટરનું વાવાઝોડું સારું, પણ આ જાય તો સારું. એવા તોફાની છોકરા મોઢે ચડાવેલા હોય. તમારા છોકરા તમારી ઓળખાણ છે ભાઈ. કોઈના ઘરે જાય તો થોડું સમજાવીને જાય કે બેટા મહેમાનથી જાય છે, શાંત રહેજે, શાંતિથી બેસી જજે. આપણા છોકરાને બટકા ભરી જાય, આપણા છોકરાને રમકડા લઈ જાય, રમકડા તોડી નાખે. આવા કજાડા છોકરા ઊંધા ગોઠણ નાખીને બેઠું હોય માના ખોળામાં, ન વાત કરવા દે, ને વાત સાંભળવા દે. આવી ધાંધણિયા ધોણાવતા છોકરા હોય છે. ખબર નહીં કે આ ચોઘડિયામાં જન્મા હોય. એવા જ ને યાર. તો યાર એટલો તોફાની છોકરો, માથા પકાવે એવો તોફાની. એમાં બન્યું એવું કે આ મધ્યમ વર્ગીય પિતા એટલે થોડી ઘણી મૂડી ભેગી કરી જીવનમાં પહેલી જ વાર ગાડી લાવ્યો છે, અને 4-wheel ગાડી આંગણામાં ઉભી રાખી છે. અને હરખ થાય ને કે ગાડીની પૂજા કરો. પેલો મધ્યમ વર્ગીય પિતા ઘરની અંદર કંકુ ચોખા લેવા જાય છે. ત્યાં તો એનો દીકરો ભાળી ગયો કે બાપા ગાડી લાવ્યા છે. હાથમાં પથ્થર લઈ ગાડીની પૂજા કરી નાખી, ગાડીની સુંદર પૂજા કરી નાખી. અને બાપ જોઈજો કેલા છોકરા, જીવનની મૂડી ભેગી કરીને મેં આ સુંદર 4-wheel ગાડી લીધી, તું આ પથ્થર લીટા પાડી દીધા મારી નવી ગાડીને. ચોખા ને કંકુ મેઘ પડતા અને બાપને આવ્યો ક્રોધ, અગ્નિ જ્વાળા ઉપર પ્રગટ થઈ, છોકરાને પકડ્યો છે. તોફાનની કઈ હદ હોય ને તારી કઈ, અને એવો માર્યો ફટાફડે. પપ્પા નહીં પણ ક્રોધ કાન બંધ કરી